नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। रात के 10 बज चुके हैं और डीडी न्यूज पर रात के 10 बजने के मायने होता है दमदार 10। जी हां, दमदार 10, क्योंकि दो टूक आपका पसंदीदा टेलीविजन शो, आपका पसंदीदा टीवी डिबेट दो टूक रात 10 बजे टेलीकास्ट हो रहा है। हमारा दो टूक का समय बदला है, लेकिन हमारे तेवर नहीं बदले। उन्हीं तेवरों के साथ हमारा यह वादा है कि लगातार सच और हर झूठ पर हम चोट करेंगे और हर सच आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज दो टूक में हम जो विषय उठाएंगे वो विषय आपके लिए जाना पहचाना है, और वो विषय ऐसा है जिस विषय को लेकर भारत में एक लंबी राजनीति हो चुकी। न सिर्फ लंबी राजनीति हुई, बल्कि भारत में जगह जगह लोगों ने दंगे भी देखे। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून की तरफ है। आप सोच रहे होंगे कि CAA की बात आज क्यों। दरअसल CAA नागरिकता संशोधन कानून 2019 में जब लाया गया था, तो उसके खिलाफ जिस तरह से देश विदेश में माहौल बनाया गया था, उसके पीछे एक बड़ी टूल किट काम कर रही थी। और कुछ लोग इस दिमाग के लोग काम कर रहे थे जो नहीं चाहते थे कि महात्मा गांधी ने आज़ादी के समय जो हिंदुओं से या सिखों से या ईसाई और इसके अलावा पारसियों, बौद्धों से जो वादा किया था, जो पाकिस्तान में रह गए, जो बांग्लादेश में रह गए, यानी पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान में रह गए, उनसे जो वादा किया था, गांधी जी के उन वायदे को भी पूरा करने में तमाम तरह की अड़चनें, रुकावटें खड़ी की गई। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक लंबा दुष्प्रचार किया गया, लेकिन आज CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब CAA 2 आ गया है। CAA 2 यानी नागरिकता संशोधन कानून पार्ट 2 भाग 2। क्यों कह रहा हूं मैं पार्ट 2 और भाग 2? इसलिए क्योंकि सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया, और वो बड़ा फैसला यह है कि इससे पहले आप जानते थे जब 2019 के अंदर नागरिकता संशोधन कानून आया, तो उसकी कट ऑफ डेट जो है वो 31 दिसंबर 2014 थी। यानी 31 दिसंबर 2014 तक जो हिंदू, जो सिख, जो पारसी, जो बौद्ध, जो ईसाई, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और साथ साथ अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, अगर वो प्रताड़ित हैं और प्रताड़ित होने के बाद उन्होंने भारत में शरण ली है, तो भारत उन प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देगा। ये सरकार का फैसला था। लेकिन अब सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। मोदी सरकार ने जो ऐलान किया उसके तहत अब से ये जो कट ऑफ डेट है वो 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। 31 दिसंबर 2024 यानी कि 2024 पिछले साल 31 दिसंबर तक जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश और साथ साथ अफगानिस्तान से आए, उनको अब अपना वीजा, पासपोर्ट की चिंता नहीं करनी है, और इनमें से कई लोग जो हैं वो अपना नागरिकता भी हासिल कर पाएंगे। धीरे धीरे ये प्रक्रिया भी चलेगी, और इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं जिनसे महात्मा गांधी ने बंटवारे के समय वादा किया था। आज इसी पर चर्चा करेंगे, और मेरा आज का जो विषय है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपके सामने है। वो सताएंगे, मोदी गले लगाएंगे। ये जो वो है, ये आप समझ सकते हैं ये वो कौन है। ये वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और साथ साथ अफगानिस्तान में वो ताकतें हैं जो अल्पसंख्यकों को धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित करती हैं। लेकिन मोदी का फैसला है, मोदी सरकार का फैसला है कि हम गांधी जी ने जो वादा किया था उसको पूरा करेंगे, और जो उत्पीड़ित लोग हैं हम उनको गले लगाएंगे, उनको भारत में शरण देंगे, और जब जरूरी होगा उनको नागरिकता भी दी जाएगी। इसी पर चर्चा करेंगे आज, इसी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। विपक्ष की ओर से इसका विरोध शुरू हो गया है, धीरे धीरे आवाजें निकल रही हैं। हालांकि पहले विपक्ष ने जो तमाम माहौल बनाया था, जो झूठ पर आधारित था, वो उनका एक्सपोज हो चुका है, इसलिए विपक्ष अभी थोड़ा सदमे में दिख रहा है। लेकिन यकीन मानिएगा, इस पर देर सवेर राजनीति होनी तय है, खास करके असम में, खास करके पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में। लेकिन इससे पहले आगे बढ़ें, सरकार को यह फैसला क्यों लेना पड़ा, क्यों कट ऑफ डेट बढ़ानी पड़ी, इसको खबरदार में समझना जरूरी है। तो आज के खबरदार में मैं आपको बताऊंगा कि सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, ये कट ऑफ डेट जो बढ़ाएगी उसका फैसला मोटे तौर पर क्यों लिया, ये आपको मैं खबरदार में बता रहा हूं।
देखिए दरअसल है क्या, करीब 1 साल पहले आपको याद होगा बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ और उसके बाद अल्पसंख्यक वहां उनकी जान माल को, उनकी इज्जत आबरू को खतरा पैदा हो गया। बांग्लादेश में जैसे ही तख्ता पलट हुआ अल्पसंख्यक निशाने पर आ गए। शेख हसीना की सत्ता जाने के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं और बौद्धों पर लगातार हमले शुरू हो गए। जैसी सत्ता गई पहला निशाना था बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया। हिंदुओं के मंदिर और उनकी संपत्ति लूटी जा रही है और महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। इसके तमाम वीडियोस भी आपने देखे होंगे, तमाम इसके जो हैं इसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी। दिल को द्रवित करने वाली ये तस्वीरें हैं। भारत ने बांग्लादेश के सामने ऐसी 3582, सोचिए भारत की तरफ से पिछले 2-3 साल में 3582 घटनाएं भारत ने उठाई हैं जहां हिंदुओं पर हमले हुए हैं। और जब ये बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था उसके बाद वहां की सरकार ने खुद 88 मामले माने कि 88 मामले ऐसे हैं जहां हिंदुओं पर हमले हुए हैं। अल्पसंख्यक हिंदू और बौद्ध अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हुए हैं। भारत की बॉर्डर पर आपने देखा होगा कितनी बड़ी तादाद में लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां खड़े हो गए थे। हालांकि उनको एंट्री नहीं दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं से लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत में आते रहे। बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। एक तरफ बांग्लादेश की कहानी नहीं है, लेकिन यह कहानी नहीं है क्योंकि बंटवारे के बाद से वहां पर इस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं। बंटवारे के समय पाकिस्तान में, यानी पश्चिमी पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जो आज भी पाकिस्तान है, बांग्लादेश नहीं। बंटवारे के समय पश्चिमी पाकिस्तान में 15% हिंदू थे। कितने हिंदू थे? 15% हिंदू थे। आबादी उनकी जो थी अब घट के सिर्फ 1.6% रह गई है। 15% से 1.6। पाकिस्तान में हर साल 1000 हिंदू और सिख युवतियों का निकाह जबरन कराया जाता है, उनका धर्मांतरण कराया जाता है। 1000 महिलाओं, युवतियों का, बच्चियों का। बीते 3 से 4 साल में पाकिस्तान में हिंदुओं सिखों पर हमलों की 334 बड़ी घटनाएं घटी हैं। मैं बड़ी घटनाओं की बात कर रहा हूं, छोटी घटनाएं मैं नहीं गिनवा रहा। 334 बड़ी घटनाएं हुई हैं बीते 2-3 साल में। अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए बड़ी संख्या में हिंदू पाकिस्तान से भागकर भारत आए हैं। इनमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और साथ साथ कुछ ईसाई भी हैं। अफगानिस्तान की अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के जो अल्पसंख्यक है वो भी CAA कानून के तहत भारत के नागरिक हो सकते हैं। अफगानिस्तान में जो है वहां पर भी लगातार तालिबान का शासन है और उसके बाद वहां हमले हो रहे हैं। कट्टरपंथी इस्लामी हमलों के कारण अल्पसंख्यकों की आबादी 2.5 लाख से घटकर 700 हो गई। आप सोचिए 2.5 लाख वहां आबादी थी अल्पसंख्यकों की, अब सिर्फ 700 रह गई। मोदी सरकार ने अफगानिस्तान के जो सिख थे उनको सुरक्षित निकालकर भारत में शरण दी। और वो तस्वीरें आप नहीं भूले होंगे, अफगानिस्तान से सिखों को अपना पवित्र गुरु ग्रंथ साहब अपने सर पर रख के जान बचाते हुए उनको भागना पड़ा और वो भारत आए, गुरु ग्रंथ साहब को अपने सर पर रखकर, जो है अपने मस्तक पर रख कर को हिलाए थे। ये कुछ हालात है और इन हालात में दरअसल जरूरी था कि CAA के जो है उसकी अवधि बढ़ाई जाए। सरकार ने वही निर्णय लिया। इसको कैसे देखेंगे इस पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये सुनवा देता हूं, जब 2019 में नागरिकता संशोधन कानून आया तो किस तरह से इस कानून के खिलाफ जहर उगला गया था, किस तरह से। लेकिन माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि आपको कुछ और दिखाऊं। इससे पहले आपको मैं ये जो है दिखा देता हूं कि किस तरह से एक झूठ जो है लगातार प्रचारित किया गया था, कैसे एक माहौल बनाया गया था CAA के खिलाफ, और हर झूठ आज झूठ साबित हो चुका है। फिर भी आगे क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन सुनिए किस तरह से CAA के खिलाफ एक झूठ फैलाया गया। माफ कीजिएगा मैं आपको यह बता दूं कि ये जो मामला हुआ था आपको अच्छी तरह से याद होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली हुई CAA के खिलाफ। उस CAA के खिलाफ जो रैली हुई उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, तीनों ने किस तरह के भाषण दिए थे। उन्होंने कहा था अब जो है सड़कों पर आना जरूरी हो गया है। ये कहा गया कि अब जो है जो सड़कों पर नहीं आएगा वो कायर होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि ये कानून है, लेकिन अभी इस वक्त मैं आपको बैठक खत्म हुई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस GST परिषद की
बैठक पूरी हुई है और उस बैठक के बाद एक बहुत बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। निर्मला सीतारमण वहां मौजूद हैं। जीएसटी काउंसिल की बैठक कुछ देर पहले खत्म हुई है और कुछ बड़े फैसले, बड़े ऐलान जो हैं वो आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाई देंगे, जिनका ऐलान अभी निर्मला सीतारमण जी करेंगे। वैसे आपको याद दिला दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले से लगभग घोषणा कर चुके थे कि आपकी जो दिवाली होगी, शानदार दिवाली होगी इस बार। और अब सुनते हैं क्या कह रही है निर्मला सीतारमण। श्रीमती निर्मला सीतारमण, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री पंकज चौधरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी श्री अरविंद श्रीवास्तव, सीबीआईसी चेयरमैन श्री संजय अग्रवाल, respected CBIC members and other dignitaries on the dais. Friends, as you are aware, the 56th meeting of GST Council concluded a short while ago. The Honorable Finance Minister will be sharing with us the landmark decisions taken at this meeting. After that, we will have the question and answer session. I request you to keep your mobile phones on silent mode. Now I request the Honorable Minister to brief the media about the decision taken today at the GST Council meeting. Over to you, ma'am. Thank you, and I thank the media for having come in so late. We concluded the meeting, and from there we have come here. And let me start by saying the Honorable Prime Minister actually set the tone for the next generation reforms on the 15th of August when he spoke from the Red Fort. So, and he desired that we give the benefit to the people at the earliest. He mentioned Deepavali, but I'll go through the decisions in detail a bit, but this reform is not just on rationalizing rates. It's also on structural reforms. It's also on ease of living, so that businesses can do their business of working together with the GST with a great ease. So we have corrected inverted duty structure problems. We've resolved classification related issues, and we've ensured that there will be stability and predictability about the GST. Rate rationalization, of course, we've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. Ease of living, simplifying registration, return filing, and refunds. I'm not getting into greater details, you'll get to know about it. But then these reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. Labor intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions we have taken today. Health related also will benefit. So the key drivers of economy have been given a prominence. And much before I get into the details, I want to thank every member of the GST Council, every finance minister who attended the GST Council today. There was no absence. Everyone was present. We've had a day-long intense discussion, but I'm grateful to each one of them. At the end of the day, they said, we're all together for the sake of the common man. एक भी रिजर्वेशन के साथ नहीं समर्थन किए, मगर पूर्ण मन से भरपूर सपोर्ट दिए हर राज्य के वित्त मंत्री। इसीलिए मैं जीएसटी काउंसिल को आभार कहना चाह रही हूँ कि लंबा चौड़ा डिस्कशन चला आज, मगर आखिर हर मेंबर इसके लिए समर्थन दिए, इसीलिए मैं धन्यवाद कहना चाह रही हूँ। इधर उधर के छोटे छोटे बात हो सकता है, मगर कंप्लीटली रेट रैशनलाइजेशन में सभी मंत्रीगण समर्थन दिए। एंड मैं इस विषय में आभार पहले व्यक्त करना चाह रही हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि पहले से ऑलमोस्ट फॉर 8-9 months ही इज बीन आफ्टर मी सेइंग आप कुछ जीएसटी में राहत दिलाओ जनता के लिए। उसका इंटेंसिव वर्क किए, हमारे एमओएस कॉम्पनसेशन सेस के ऊपर
चेयर कर रहे थे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ही वर्कड वेरी हार्ड विद ऑल ऑफ देम. Samrat Chaudhary ji worked on the rate rationalization. And not only the chair, but the members of each of these GOM have worked very hard. I am absolutely appreciative of every one of the ministers. इस समय का मांग को समझ करके समर्थन दिए, इसलिए उन सबको मैं आभार व्यक्त करना चाह रही हूँ. There's also, of course, trade facilitation measures and process reform. वो भी इसमें शामिल है, जिससे enhanced verification measures which are aimed at curbing fraud have led to complex documentation, उसको भी simplify करने का, और data analysis वगैरह है. Process reform के ऊपर मैं विस्तार से आपके question answer के समय में जवाब दूंगी. मगर primarily, I'm sure all your interest is to know where is what, which one comes down in rate. उसमें एक just indicate करते हुए, I'll stop my input. If Revenue Secretary has anything more he can add. उसके बाद आपके question answer करते हुए हम बाकी सबको cover करेंगे. Common man and middle class items में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, bars, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware, and other household articles have all come to 5. Whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil. 5 से 0 में जाने वाले items indicate कर रहा हूँ. Ultra high temperature milk, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. So roti किसी के ऊपर भी, chapati or roti or paratha or whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें food items बहुत सारे हैं. नमकीन से भुजिया है, sauces है, pasta है, instant noodles है, chocolates, coffee, preserved meat, cornflakes, butter, ghee, ये सब 5% में आ रही है. फिर reduction from 28 to 18%. इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज़ हैं. एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. ये I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. Reduction of GST from 12 to 5% on 12 specified biopesticides. Also from 12 to 5 is natural menthol. So किसान के लिए उनके products के लिए जो वो उपयोग करते हैं उन सब में it has come down. Again from 12 to 5, handicrafts and also labor intensive sectors. What are they? Handicrafts, marble, travertine blocks, granite blocks, intermediate leather goods. ये सब 5 में आ रही. Reduction of cement from 28 to 18. क्योंकि घर बनाने में middle class के लिए cement इतना आवश्यक है, इसीलिए 28 it has come down to 18. Health related items, 33 life-saving drugs and medicines
and they all come down from 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases. There are several drugs and medicines coming down to 5 from 12. I'm not listing each one of them out. Like that, very many other items, diagnostic kits, reagents, blood glucose monitoring system, all of them are coming to 5%. Similarly, spectacles and goggles are for correcting vision. They are also coming down to 5% from 28. I'm sure all of you all are interested in knowing about automotive sector, about which you've been frequently asking us. From 28 to 18% on small cars and motorcycles which are equal to or below 350 cc. Reduction of GST from 28 to 18 on buses, trucks, and ambulances. Uniform rate of 18% on all auto parts, irrespective of their HS code. Three-wheelers from 28 to 18 again. So I move to one very important thing on inversion of, correction of inverted duty. The long pending inverted duty structure problem is getting corrected for the man-made textile sector by reducing GST rate on man-made fiber from 18% to 5% and man-made yarn from 12 to 5%. So that will take care of every anomaly that was there in terms of inversion that's getting sorted out. So this actually gives effect to government's objective of the fiber neutral policy. So that's really getting seen in our action today. We are also correcting the inverted duty structure problem in fertilizer sector by reducing GST from 18% to 5% on sulfuric acid, nitric acid, and ammonia, which are very important for the fertilizer sector. Renewable energy is the next. Reduction of GST from 12 to 5% on renewable energy devices, parts for their manufacture, such as biogas plant, windmills, wind-operated electricity generator, waste-to-energy plants, devices, PV cells, whether or not assembled in modules or made up in panel, solar cookers, solar water heaters, and systems, and so on. Should I stop there and leave you all to ask questions? Just want to highlight the last one, that there is a special rate which is 40%. Actually, almost all goods are between 18 and 5. If there's any change, they only can shuffle between the 18 and 5. There is one special rate which is only for sin and super luxury goods. That special rate of 40% has also been proposed and it's cleared. That will apply only to pan masala, cigarettes, gutka, and other tobacco products such as chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, and BD. All goods, including aerated waters, containing added sugar or other sweetening matter or flavored, caffeinated beverages, carbonated beverages, or fruit drink, or carbonated beverages with fruit juice and other non-alcoholic beverages, excluding those specified at lower rates, will all be covered under 40%. Mid-size and large cars, motorcycles of engine capacity exceeding 350 cc, aircraft, for example, helicopters and aeroplanes for personal use, distinctly for personal use, yacht and other vessels for pleasure or sports are all under 40%. So I think I have covered most of it. One last point on the RSP. GST will be levied on retail price, which is the RSP, instead of transaction value on pan masala,
pan masala, gutka, cigarettes and other tobacco products such as zarda, scented tobacco, unmanufactured tobacco and chewing tobacco. Again, one other point which I will conclude with. Insurance services from 18% currently will go into 2-3 different categories. I'll say that to you. Exemption of GST on all individual life insurance policies. Whether term life, ULIP or endowment policies and reinsurance thereof, to make insurance affordable for common man and increase the insurance coverage in the country. Exemption of GST on all individual health insurance policies, including family floater policies and policies for senior citizen, and reinsurance thereof to make insurance affordable for the common man and increase the insurance coverage in the country. I think I'll leave it there. We'll answer questions. Thank you, ma'am. Now we move on to the question There's and answer one more. session. Sorry, I'm getting tempted to say one last thing. There are 4 points which I want you all to take into consideration. All this will be effective 22nd September 2025, which is the first day of Navaratri. The changes in GST rates of all goods, except for pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, BD, will be implemented with effect from 22nd September 25. Except for these, for all items, the new rates will come into effect from 22nd September. I hope I'm clear on that. But pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco and BD will continue at the existing rates of GST and compensation cess where applicable till the loan and interest payment obligations under the compensation cess account are completely discharged. I hope I'm clear. Every item will come under the new rate from 22nd September, except for these tobacco-related products, which will continue on the 28% and compensation cess where applicable, till such a time we completely repay the loan. Based on this decision of this set of tobacco products continuing till some time, based on that decision, the Union Finance Minister and the Chairperson of the GST Council is actually authorized to decide on the actual date of transition for these tobacco-related products as soon as the loan and interest is cleared. Yeah, please. Thank you, ma'am. Before we start the question-answer session, please introduce yourself before asking the question. Also speak into the mic because this is being live streamed, and also raise the placard. We will take the questions one by one. So, number 9. Ma'am, this is Priyansh from Money Control. I wanted to ask what is the possible revenue loss that has been estimated due to the rate cuts? And secondly, for the states, has there been any discussion on how the revenue will be compensated to them? As the Finance Minister explained, the objective of this proposal, which is the GST rate structure rationalization, accompanied with process reforms. So the first request I will have is to have the appreciation of the proposal in the manner in which it has been prepared, in order to not distract ourselves with issues which will be an outcome of this process, but the core principle of this exercise needs to be appreciated in totality. The
We have estimated a figure. We expect that the net fiscal implication, we would not call it as a revenue loss because that doesn't seem to be the correct terminology. But net revenue implication of this proposal is expected, we have estimated it to be around 48,000 crores. This is on the consumption base of 23-24 because that is where we had all the segregated data. What I would also request is to have to appreciate this exercise better. It's important to also understand why looking at a particular number of revenue implication and highlighting it in a manner which is not proper may not present the correct picture of this exercise. The reason being, one, typically the rate rationalization exercise would result in buoyancy effects. We do expect, as mathematically one may calculate based on consumption of 23-24, but economically that is not how outcomes will evolve. And we do expect buoyancy to play a major role because of this rate rationalization exercise in enhancing the revenue. In addition, there is also an effect on the consumer behavior. What he spends on and how much does get influenced by price, which is going to be expected to get positively influenced by this exercise. We also expect compliance to improve due to this exercise. Madam explained to you how rates which were at different levels, where classification issues would be rampant, like sectors like food or transport, auto parts, etc. Once rationalized, it will improve and enhance compliance because many of these disputes would not necessarily result in revenues, but would linger on and would end up having a lot of resources, both of the business and the department, in struggling to settle those disputes. So compliance would also have a very positive effect on the revenue generation. Finally, there is a technicality that when the rates change, the rate of the value chain itself changes, and tax, you know, is paid through ITC and cash, and the actual implication of that will have to be worked out. I would just like to highlight a number from before just to explain how these changes do play out. For example, when earlier the average rates were around 15.5 in the earlier part of the GST, the compliance in the form of GSTR TB was around 85 to 90%. Now the compliance has improved to almost 97% as the rates have come down. We do expect these positive changes will have and we believe that in this entire exercise will be fiscally sustainable both for center as well as the states. 54. Yeah, good evening, ma'am. Shishir from Hindu Business Line. My question is about the anti-profiteering because now so much rate reduction is there and we do not have the anti-profiteering mechanism. As of now, we understand that GST 80 can take only the pending cases and the cases directed by the courts. So what kind of mechanism we are going to have? And the second question is about the clarification on the revenue implication, that 48,000 crore is on annualized basis or just for the FY26, ma'am? On the first question of anti-profiteering, just to give you a couple of statistics, that since inception, under the arrangement of anti-profiteering, which is no longer in place now, only around 704 cases were registered with the authority, and 60% of the cases were initiated within the first 3 to 4 years of implementation, and the total profiteering amount that was alleged was around 4,362 crores in these 704 cases. So we expect that last time too, these data shows that industry has largely passed on the benefits of rate cut. At that time too, the industry made public statements and committed, and you would have heard and you would have seen that a lot of industries have already come out and have committed that they will be transmitting this benefits too. Administratively, both at the state level as well as at the CBIC level, we will definitely be engaging with the industry and seeing to it that the benefits to the consumer, as is planned as per the exercise, is going to be transmitted to the consumers. And we do expect that since it is to the benefit of the businesses too, it is going to happen eventually. On the issue of the revenue loss, I think the question, probably you didn't appreciate the point I made the last time. It is difficult to look at these issues mathematically. So I would rather, we have done a data based on a historical number, that is 23-24 consumption.
How will 26 happen will obviously depend on how consumption evolves. And we, as I said, are confident that this is going to be fiscally sustainable. This is Deepshika from the Economic Times. One just follow-up to the revenue question. What would be what is the revenue neutral rate after these reductions? And also on compensation cess, what happens after the loans are paid, especially on the tobacco products and high-end luxury products? Is there any decision on the future of the cess? Will there be something else coming in its place, or? I'll have the Revenue Secretary tell you about the revenue neutral rates. But on the compensation cess, we've discussed it today very clearly. It will continue on those goods which I mentioned, the tobacco and tobacco-related products, over and above the 28%, which is the system which prevails now, till such a time that we repay the loan. And after that, there will not be a cess. And those items which were with compensation cess have already been proposed to be at 40% because they are sin goods rate. They are, as I said, 40% is not part of the scheme of things, it's at the extreme. No other good will go there except for these tobacco-related products. So they will be, the incidence will be on them at 40%. Revenue neutrality. No, I didn't get the question. Revenue neutral would mean what? No, but what? Can you explain your question? What revenue neutral would mean? Down from 15.5, the average rate, what would it be after these reductions? It'll obviously depend upon how the transactions happen. So consumption, I am assuming what you are saying is the total value of transaction total tax collected divided by total value of transaction. So that is something one can calculate historically. For the future, as I said, we expect a lot of effects of buoyancy, compliance, consumer behavior. So this number is going to be obviously something which we will get to as we reach there. 238. Anshul Magazine from Indian Express. Just a clarification on the tobacco part, because I believe when GST was rolled out, Centre had the powers to levy NCCD on tobacco. So how will it get levied on, say, something like pan masala? If you could elaborate that. And secondly, was there any decision regarding electric vehicles? Because that was also one of the proposals submitted by the GOM. See, on the pan masala, tobacco and everything else, under the GST, till such a time the loan is repaid, as I said, the 28% plus the compensation cess will run. Once I clear the loan, they all come to 40%. And that's what is the GST. EV remains at where it was. Yes, it remains at where it was, 5. 214. चूँकि अभी काफ़ी खबर चल रही थी कि जो 2500 जो अभी ब्रांडेड 1000 रुपये से ऊपर का जो शर्ट एंड फुटवेयर्स है, मैं राजीव हूँ सर दैनिक जागरण से, तो उस पर उसको 2500 उसकी सीमा की जा रही थी, जो 2500 से ऊपर है उनको उन पे ज़्यादा टैक्स लगेगा, तो ऐसा कुछ हुआ या अब सब पे जो भी फुटवेयर और गारमेंट्स होंगे 1000 रुपये से ऊपर के भी उन पे भी सिर्फ 5% ही लगेगा? इस पे कुछ फैसला हुआ? नंबर 1. नंबर 2 सर कि स्मॉल कार, मिड साइज कार, तो क्या इसमें 1200 सीसी से ऊपर वाले सभी कार पे 40% लगेगा? जहाँ तक फुटवेयर का सवाल है, आज के दिन 2 रेट्स थे. 1000 रुपये से कम वालों के ऊपर 12% और 1000 रुपये से ऊपर वाले के ऊपर 18% लगता था. सो जो चेंज किए गए हैं, जैसे आपको ज्ञात है कि मैडम ने पहले बताया कि 12% का रेट अभी नहीं है, तो 2 रेट जो अभी हैं वो 5 और 18 के हैं. 5% पे जो 2500 से कम वाली वस्तुएं वाले फुटवेयर हैं और 18% पे जो 2500 से ऊपर वाली वस्तुएं. आपका दूसरा सवाल किस इशू से था? सीसी. हाँ, मैडम ने आपको बताया कि छोटी कारें जो हैं वो 18 पे होंगी
और बाकी सारी कारें जो हैं वो 40 पे होंगी। डेफिनेशन तो आई थॉट वो तो डिपार्टमेंट MHRT मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट रेगुलेटर का है। पेट्रोल की 1200 सीसी और डीजल की 1500 सीसी होती है, और उसके साथ शायद लेंथ का भी एक लिमिटेशन होता है। तो जो उनका रेगुलेशंस के हिसाब से छोटी कारें हैं वो हमारी 18 पे रहेंगी। हम लोग अलग से कोई नया डेफिनेशन उसका नहीं बना रहे हैं। 45. I had a related question on hotels and on air travel. Again, there were two classifications there. So if, and I suppose, I think all these would be in the detailed press release that you'd be issuing, but if you could just help us. 269. Thank you, ma'am. This is Girish from Mint. Ma'am, some states had suggested that there could be a new duty imposed on, items on the 28%, which will move to 40%. Has that been considered? And secondly, ma'am, there is no cess applicable on high-end cars, which has moved to 40%, right, ma'am? If an item has moved to 40%, there's nothing more to be added. Okay, because the maximum rate which you can levy on a car, on any item is 40%. And in the 40% category, we've put all the tobacco and tobacco-related sin goods and super luxury items only. Number 3. Hello, ma'am. This is Priyoshmita from Informist Media. Ma'am, first I wanted a clarification. Are we still looking at discontinuing compensation cess around November? As in, is that the timeline we are following to repay the loans? And secondly, states had pitched for some kind of a mechanism to compensate them after the rate changes are effective because of the revenue loss. So has there been any discussion, and is the center looking at something on those lines? Thank you. I think I've mentioned it clearly, till such a time that the loans don't get repaid. We will continue with the 28% items and the compensation cess collection over it, particularly only those items which I read out, tobacco-related products, and they will continue till such a time I repay the loan, which is the council has authorized the finance minister to stop that collection the moment the loan is repaid. I cannot speculate on the time now whether it is October or November, but it will be well within, I think, this calendar year. Number 2. I think, first of all, I would like to request the media to look at the GST Council as where the center and the states are seated together. I mentioned this in the council also. The center may be a 1/3 partner, the states put together can be 2/3 partner. But we are all in it together. So anything that which is gained or lost is for everybody. It's not as though states have lost, the center's not gained. If all of us have lost, all of us have lost. And I don't think, and I'm glad that the Revenue Secretary had made this point in the council, it's a revenue instance. The incidence is what is the matter. It's not a static situation. Once the rates have come down per the economic theory that you may want to quote, the buoyancy goes up. People come out to buy more. And therefore, this discussion has happened in today's council. And I have put this argument before, that the center and the states are seated equally. And any gain or any foregone, none of that is perceived, because when rates are coming down, we expect the market to be more buoyant, people to come out and spend more. However, all of us are sitting there together. Compensate for states' loss, even center is losing. If anything, center loses more in a way.
Because 50-50, you divide from my 50, another 41 goes back to the states. So I want the media, particularly those who are covering the economy, finance ministry, to understand in the GST Council, the center and the states are together in it. Nobody is a donor and nobody is a donee within the GST Council. Number 2. Pallavi from... Can I just supplement, because this issue has come from many. So our earlier request was, there are two parts to this issue, and I would just request the indulgence of the media also on this. This repeated use of the word called revenue loss. You know, so obviously somebody has lost to somebody or something to that effect. Kindly understand, this is a tax rationalization exercise which is resulting in reduction of rates of taxes to be paid, let us say, by a common man. Rates paid by on food, on health, on agricultural implements, on labor-oriented sectors like job work. I'm not very sure whether loss is the right interpretation of government saying that we have given money to a consumer. It is an economy that we are talking about. Both of them are there. After all, the money which government will not collect as tax is going to be remaining in the pockets of that consumer who will end up using it. So my request is this terminology loss, because it presents the impression differently from, and which is why I had requested. There is a revenue implication, naturally. So the second part to this understanding is that revenue implication is a dynamic number because it will depend on how response happens. Mathematically, one can calculate, that can only be done on historical data. But that historical data may not end up to be true because we do expect behavior of consumer changing, buoyancy factors changing, compliance improving, and this has been the historical reality. You would remember that after compensation cess went away, the buoyancies really went up of GST. So we do expect things to move in the positive direction. We have done our numbers and we believe it is fiscally sustainable. The number that I told you is based on 23-24. And even with projections and expectation on other things turning in the positive side, which we are hearing both from the consumers as well as from the industry, we expect this exercise to be fiscally sustainable. Okay, I'm Pallavi from CNN News 18. Ma'am, two things over here. There were 8 states which actually said that we want something called the state-level GST on products like alcohol, petrol, and real estate. Was this even discussed at the GST meeting today? And second is that they are all talking, I'm sorry to use that word, but revenue loss. 15,000 crore revenue loss is what Siddaramaiah said. I know there are states like Karnataka and Kerala who insisted on that, and I think that is why your meeting was delayed. How do you want to actually address that? Because many of them are also facing problems like they're talking about floods. And finally, when you are talking about a GST restructuring, was the tariff turmoil with America an important consideration? The tariff turmoil is not a matter which influenced the GST reform, because we've been at it now for more than 1.5 years. Some group of ministers was working on rate rationalization, some other group of ministers a bit later was working on insurance, and so on. And compensation cess was a reality, that it is going to end the moment you paid back the loan. None of this has anything to do with the tariffs. So, no, there's nothing to do with the tariffs at all. One. Second, you were talking about petrol, diesel, 8 states. None of that was subject of our discussion because that is not part of the GST Council at all. And the third, numbers are being thrown around. This much loss, that much loss. You've just heard the Revenue Secretary detail on the basis of 23-24 numbers, am I right? 23-24 data, which is the last available for all the categories. And he stated what is the net amount that we'll have to be looking at. So there is nothing more. I'm not going to join forces to argue on, oh, somebody said this much, somebody else said that much. Our data is here, we put it, and that is coming out to all of you all as well in the press note. 237.
मैम तरुण शर्मा फ्रॉम जी बिजनेस। मैम 2 सवाल हैं, एक क्लैरिटी के लिए पूछना चाहूँगा। जो टैक्स इंसिडेंस है, आपने कहा कि हाईएस्ट ब्रैकेट जो रहेगा वो 40% रहेगा, तो जो अभी तक सेस लगता था वो नहीं लगेगा। अब जो भी चीज़ें होंगी वो मैक्सिमम 40% पे होंगी टबैको प्रोडक्ट्स को छोड़ के। और दूसरा सवाल मैम, जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट्स, एक ड्रोन के लिए भी एक एजेंडा था, क्या मैम उस पर भी कोई फैसला हो पाया? एक चीज़ मैम, एक क्लैरिटी और चाहेंगे कि जो डीलर्स के पास अभी गाड़ियाँ खड़ी हैं, यदि वो 22 तारीख से पहले 22 तारीख के बाद बिकती हैं तो वो किस कैटेगरी में आएंगी? क्या वो जो अभी का जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें कैलकुलेट की जाएंगी या नए वाले टैक्स स्ट्रक्चर में कैलकुलेट की जाएंगी? शुरू में जैसे माननीय मंत्री ने आपको बताया कि ये हमारा अप टू रेट जीएसटी स्ट्रक्चर हो गया है, तो 5 और 18 आर द रेट्स. 40 is what we consider it as a special rate, and on the lower side, apart from exemption, there are some other special rates. Special rates are meant to take care of either very, very unique sectors or unique requirements or certain policy positions that government may have had on those. Typically, the special rates are considered special because they are not by their very nature part of a general structure. So they are not expected to be open-ended. It is not like this is a rate, then you can swing people things between here and there. 40 is expected, items have been identified and will positioned there. This is the way in which, that is why this is called GST rate rationalization structure. So it's a rate structure itself which has been rationalized, within which then certain principles have been followed to fit things. That is point number one. What was your second question? I would suggest that specific items and procedural issues off-the-cuff response will not be a good idea. Department will be issuing detailed instructions about everything, and we will see to it that those who need it receive it in transparent fashion, in a timely fashion. वही जो आपने बताया ना, ट्रांजिशन वाले जितने इश्यूज हैं इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड, आज जीएसटी काउंसिल का डिसीजन हुआ है, तो उसको ऑफ द कफ रिस्पांस देना ठीक नहीं होगा. वो हमारा डिपार्टमेंट डिटेल में सारे इश्यूज को एड्रेस करते हुए जवाब देगा उसका. और आज इसके बाद मैडम ने जैसे इंस्ट्रक्शन दिया है, एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक लिस्ट भी इशू होगा, प्रेस नोट होगा जिसमें सारे डिटेल्स होंगे आइटम वाइज जो आप देख सकते हैं. 189. मैम, मैं आलोक प्रियदर्शी CNBC आवाज़ से. सबसे पहले जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन के तौर पर आपको बधाई, क्योंकि आपने पूरे कंसेंसस के साथ ही इसका लागू करवाया. मेरा सवाल ये है कि रेट में कटौती हुई है, सबको फ़ायदा होगा, लेकिन ये रेट आम आदमी तक इसका फ़ायदा पहुँचे उसके लिए क्या कोई मैकेनिज्म बनाया जाएगा? क्योंकि एंटी प्रॉफिटरिंग मैकेनिज्म अभी है नहीं, या ऐसी एंटी प्रॉफिटरिंग बॉडी है नहीं, तो कैसे इसको रेट को हम जो कंज्यूमर है उस तक पहुंचाएंगे ताकि कंपनी इसमें बेनिफिट ना करें, ग्राहकों तक उनका फ़ायदा पहुंचे? सर हिंदी में बता दीजिए. एंट्री प्रॉफिटियरिंग का हम लोगों ने जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो उत्तर दिया उसमें बताया कि पिछली बार जब ये एक्ट में एक प्रोविज़न था, उस प्रावधान के अंतर्गत 704 केसेस रजिस्टर हुए थे कुल मिला के, जिसके करीब 60% केसेस पहले 3 से 4 साल में थे, जब उम्मीद होती है कि ये इश्यूज़ आते हैं ज़्यादा. और टोटल जो प्रॉफिटियरिंग का अमाउंट एलेज किया गया था इन इश्यूज़ के ऊपर, वो 4,362 करोड़ का था. तो इन फिगर्स को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि इंडस्ट्री ने ट्रांसमिशन में बहुत ज़्यादा कोई मतलब इश्यूज़ आए, कंसिडरिंग द स्केल ऑफ द एक्सरसाइज. तो इस बार भी हम लोगों को ये काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि इंडस्ट्री रेट्स को ट्रांसमिट करेगा. पब्लिकली काफ़ी मेजर सेक्टर्स की इंडस्ट्री ने ऑलरेडी ये पब्लिकली कहा है, कमिट किया है कि हम इस रेट को ट्रांसमिट करेंगे. इकोनॉमिकली ऑल्सो हमें लगता है कि फोर्सेस ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन विल वर्क इन दैट डायरेक्शन. Administratively, CBIC और स्टेट लेवल पे we are engaging and going to engage with industries to see that the benefit जो गवर्नमेंट कमिटेड है इस बात के लिए कि ये कंज्यूमर तक पहुँचे, वो पहुँचाने के तरीके देखे जाएंगे. 49. Ma'am, Prakash Predashi from ET now. So what will be the overall impact on GDP after implementing these rate rationalization decisions?
Again, something on which you like to speculate on. It depends on how people have received this rate reduction. And they'll have to come out and once you have a couple of months going with all the purchases, then we'll be able to get some number. It'll be too much for me to speculate on it now, but I think it'll have a very positive impact on the GDP. 209. Prashant Sahu from Financial Express. So the rate reductions will have a positive impact on the consumption, and it will also help widen the taxpayer base. So the revenue implication, as the Secretary said, is about 48,000 crore. So as per your calculations, how soon it will be, neutralized, given that the buoyancy will be there, consumption will increase, and the taxpayer base will widen? So this seems to be different ways of asking the same question, which is already answered. I don't think you got what I explained. I did not say 48,000 is an implication for this year. I said 23-24 data of consumption says, if you calculate, with that consumption being what it is going to cost 48,000 crore. But then I also supplemented it by saying that these numbers will be dynamic because of the parameters I explained. So we'll have to see as we go along, as we go further. But as Madam said, it is going to have a positive impact on economy. We are hopeful, and we do believe that this is going to be positively taken in both by the business, trade, industry, as well as consumers. 184. मैम जय मिश्र दूरदर्शन से प्रधानमंत्री जी का भी रिएक्शन आ गया, उन्होंने आपको बधाई दी है, जो जीएसटी काउंसिल है उसके सभी सदस्यों को बधाई दी है, लेकिन सबसे लास्ट में उन्होंने कहा है कि ये रिफॉर्म्स छोटे और मध्यम उद्योगों को ईज ऑफ लिविंग में मदद करेंगे, तो ये शायद संदेश पहुंचना चाहिए, उस पर मैं थोड़ा सा आपसे क्लैरिफिकेशन चाहूँगा, कैसे फ़ायदा पहुंचाएगा एमएसएमई सेक्टर को? एमएसएमईज को बहुत सारे फायदा है इसमें, क्योंकि अपने शुरुआत में से ही हम बोल रहे हैं, वो आपको मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी किए हैं, कंप्लायंसेस के लिए उनको बहुत समय नहीं लगेगा और सिस्टम भी सिंपल हो गया है, रजिस्ट्रेशन भी सिंपल है, और क्लासिफिकेशन के वजह से जो कन्फ्यूजन आता था वो भी अभी नहीं होना है। ऊपर से इन्वर्शन करेक्शन जब हम कर रहे हैं, रिफंड्स तुरंत मिलेगा, और जहां इन्वर्शन नहीं है पैसा लॉक नहीं होएगा, मतलब मंथ तक यू वेट करो, आई मीन यू हैव पुट द मनी इन, यू आर नॉट गेटिंग द रिफंड, वो सिचुएशन अभी नहीं है। लॉक्ड अप मनी का प्रॉब्लम जो एमएसएमई को बार बार आता है वो नहीं होने वाले हैं। ऊपर से उनका रॉ मटेरियल और उनका इंटरमीडियरी प्रोडक्ट्स जो उनके लिए चाहिए वो सब रेट में कम हो रही है, इसीलिए उनका पूरे बेनिफिट ही ऐसे मैं समझ रही। 188. Hello ma'am, this is Suchandrima, I'm from INS. So is there any changes in GST filing? Is there any rate changes in the GST filing? Of course there are. आप बताना चाहेंगे प्रोसेस रिफॉर्म के 2-3 एलिमेंट्स, रजिस्ट्रेशन एंड? देखिए इसमें जैसे regarding the process reforms, many steps have been taken. One is that GST registration process has been simplified especially for small businesses or where they are trusted applicants. So small businesses who on their own assessment estimate that they will not be passing on more than 2.5 lakh of input tax credit, they can opt for that simplified registration, and that registration will be granted within 3 working days automatically by the system itself. And in case then after obtaining this registration, if they grow and they want to transition to the normal registration, for that again there is a provision, and based on the risk analysis for the normal category of registration, they can be transitioned to the normal category. Similarly, there is a process reform which has been approved by the GST Council or recommended by the GST Council, is regarding the refund in case of zero-rated supplies. Presently there is a provision of granting of 90%
the claimed amount on provisional basis. Now, GST Council has recommended amendment in the rule, and which prescribes that on the basis of identification as risk evaluation by the system, this 90% amount can be granted within the 7 days by the officer. So earlier, using that provision, the percentage noticed by us was very less. But with this amendment in the rule, the percentage will go up substantially. In addition to that, in case of inverted duty structure, refund can be claimed. And in those cases, presently there is no provision of granting of 90% amount on provisional basis. So amendment in the law has been recommended by the GST Council. And because this amendment is likely to take some time because it will require the approval of the Parliament. And the Honorable Finance Minister has instructed the Central Tax Department that in such cases also, like in case of zero-rated supply refunds, in such cases also, pending the amendment in the law, on the basis of identification as risk evaluation by the system, in such cases also, the refund should be granted to the taxpayer so that their liquidity position improves and the amount get refunded to them, which they can utilize in their working capital. As far as filing, other filing, you mean to say normal monthly return filing? In monthly return filing, presently there is no change which has been recommended by the GST Council. 237. मैम, आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में बताया, अंकित हुए एबीपी न्यूज़ से, कि इसका सीधा फ़ायदा आम उपभोक्ताओं को मिलने वाला है, देश के आम उपभोक्ताओं को। लेकिन हमको पता है कि जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था उसके बाद भी इसको लेकर राजनीति भी हुई थी, गब्बर सिंह टैक्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। और आज जब रिफॉर्म की बात हो रही है तब भी विपक्ष के कुछ नेताओं के जो है पोस्ट आने लगे हैं उसी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, ये कहते हुए कि जो अधिकतम स्लैब था 28 का, उसको बढ़ा करके 40% कर दिया गया है। मैम, क्योंकि पॉलिटिकल है। क्या टोबैको के ऊपर 5% टैक्स मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी? क्या तंबाकू के ऊपर और गुटखा के ऊपर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम 5% में दें? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके समय पर जीएसटी लागू करना असंभव माने, क्योंकि ट्रस्ट स्टेट केंद्र सरकार के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। वो कॉम्पनसेट कर पाएंगे, कुछ अश्योरेंस दे पाएंगे, इन सभी विषयों के ऊपर यूपीए सरकार के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स भरोसा नहीं किया, इसीलिए वो लागू कर नहीं पाए। हम मोदी जी के नेतृत्व में लागू भी किया और सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं, जिससे जनता को राहत मिले उनका डे टू डे आइटम्स के ऊपर, और एमएसएमई और लेबर इंटेंसिव यूनिट्स को भी राहत मिले, जिससे वो ईसी कंप्लायंस भी होगा, रेट भी कम होगा। कांग्रेस पार्टी को मैं कैसे क्या शब्द उपयोग करूं, उनके माइंड तैयार करें। अपोज करना है कि समर्थन देना है। अच्छे विषय जो जनता के लिए हित में है उसमें समर्थन देने में कोई जनता आपके ऊपर कोई कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, मगर अब जनता आपको सही जवाब देंगे, क्योंकि जब कट कर रहे हैं रेट उसमें समर्थन देने में संकोच और ऊपर से कंफ्यूजन करवा रही हो जनता के मन में। जनता आज आपके गुमराह वाले काम में आपके साथ नहीं है, आपको एक्सपोज करेंगे जनता। Number 4. Nikunj Johri from Reuters. Ma'am, the decision regarding exempting health and life insurance premiums, there was some apprehension that the industry had that exempting in the sector and premiums will deny them input credit. And so do you see this lowering premiums, and will this help the government in achieving its target of letting insurance for all?
See, this was so much questioned last year. In the parliament, opposition members of parliament and many members of parliament from various states questioned, saying, you want to tax insurance premium? After a detailed study, taking stakeholders into confidence, we have come up with this so that families and also people who take individual insurance get their benefit. Of course, we'll make sure that companies pass on this benefit to the people who are taking the insurance cover. So beyond that, I don't think we should have any doubts about where the government's intention lies. We want to give people who are looking at medical insurance, at least the families, individuals, get the relief. But if there's more, I'd like to have Revenue Secretary add on it. Just one fact that the insurance companies themselves have publicly assured that they will be passing on the benefit. 54. Ma'am, Anuradha from Economic Times. A small clarification on compensation cess on coal. Like what will happen to that? Because you... As Madam explained in the beginning itself, that compensation cess is linked to compensation and as of now linked to repayment of loan, and so whichever day it is getting over, it will be, the compensation cess levy has to stop. Current decision is that the compensation cess will only continue on those items which Madam listed out till the time the loan is repaid. On rest of the items, compensation cess is not going to be there at all. The new GST revised rate will apply. On coal, the revised rate would be 18%. Okay, thank you. 47. Ma'am, Rishabh Bhatnagar here with NDTV Profit. Currently, online gaming deposits are taxed at 28%. With the online gaming ban now, are there any special provisions for esports and online social games? So the last question, 255. Hello, sir. Hello, ma'am. Amrit Prakash from ANI. सब लोग देख रहे थे जीएसटी रिडक्शन को, आप टेलीविज़न पर भी देख रहे होंगे. कितना इफेक्टिव होगा ये आम कस्टमर्स को लेकर के और कैसे कंज्यूमर्स तक पास होगा, ये पहला सवाल है. और हम बीते दिनों में भी देख रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के बहुत बातचीत चल रही थी और हमने इसमें भी देखा है कि एक शार्प रिडक्शन देखने को मिला है फ्रॉम 12 to 5. जब हम बात करते हैं इरिगेशन सिस्टम्स को लेकर के, ट्रैक्टर्स को लेकर के, तो हाउ डज द गवर्नमेंट view this move in terms of boosting farmer incomes in particular, ma'am? And when we talk about global competition of Indian farmers, तो उनकी इनकम को इंक्रीज करने के लिए और कंपटीशन में को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर को कैसे प्रॉफिट हो, उसको लेकर के गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है? जी, जीएसटी जैसे आपने ही खुद रिकाउंट किया कि सब्सटेंशियली फर्टिलाइज़र सेक्टर में सारे इन्वर्टेड ड्यूटी का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है, विच विल अनेबल द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र टू बी एनकरेज्ड. और एग्रीकल्चरल सेक्टर के जितने ये इम्प्लीमेंट्स 12% पे थे, इनको 5 पे ले जाया जा रहा है, विच विल एनकरेज, विच विल डू 2 things. 1, it will make it cheaper for farmers to get it. 2, we expect more farmers to be able to use it, which enhances productivity of the farms themselves. So there will be positive effects on this. Obviously, in addition to it, all that government is doing in agricultural sector through policies and programs and other implement, those will continue and eventually will be supplementing those efforts by this tax rationalization. I want to thank all of you for having joined the media briefing at this late hour, and also want to thank the Honorable Finance Minister and the dignitaries on the dais for the briefing on the groundbreaking decisions of the GST Council meeting today. Thank you, everybody. तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण. प्रेस कॉन्फ्रेंस का 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में बेहद बड़ा फैसला लिया गया है
और अब दो केवल टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18% का जो टैक्स स्लैब होगा। कुछ एक वस्तुओं पर और लग्जरी से जुड़ी चीज़ों पर 40% टैक्स के भी और सेस की भी प्रावधान किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को जो बात कही थी उसी वादे को पूरा करते हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक में बेहद अहम फैसला लिया गया है। 2 दिन की इस जीएसटी काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अब 2 टैक्स स्लैब जीएसटी के होंगे और जीएसटी का ये टैक्स स्लैब जो है वो मूलतः 5% और 18% का होगा।